Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss Krebs cycle. During the 19th century, biologists discovered that in the absence of air, cells produce ethanol or lactic acid, whereas in the presence of air, cells consume oxygen and produce carbon dioxide and water. In 1937, the German-born British biochemist Hans Krebs reported the discovery of citric acid cycle. It is also called as tricarboxylic acid cycle, and after Krebs' name, it is also called as Krebs cycle. For his discovery, Hans Krebs was awarded the Nobel Prize in 1953 in the field of physiology and medicine. Krebs cycle takes place in matrix of mitochondrion. During Krebs cycle, two electron carriers NAD and FAD act as hydrogen acceptor. On reduction, NAD is reduced to NADH while FAD is reduced to FADH2. 19th सेंचुरी में बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में सेल्स एथेनॉल या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। 1937 में जर्मन बॉर्न ब्रिटिश बायोकेमिस्ट हैंस क्रेब ने सिट्रिक एसिड साइकिल रिपोर्ट किया। सिट्रिक एसिड साइकिल को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और क्रेब के नाम पर इसे क्रेब साइकिल भी कहते हैं। इस डिस्कवरी पर हैंस क्रेब को 1953 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया। क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। क्रेब साइकिल के दौरान दो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स NAD और FAD एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर एक्ट करते हैं। रिडक्शन होने पर NAD NADH बनाता है, जबकि FAD FADH2 बनाता है। Before to enter Krebs cycle, pyruvic acid is oxidized. The pyruvic acid, which is generated in cytosol during glycolysis, is transported into mitochondrial matrix through the inner mitochondrial membrane via a specific transport protein. Pyruvic acid is decarboxylated into acetyl coenzyme A in an oxidation reaction by the enzyme pyruvate dehydrogenase. Dear students, acetic acid is produced in the form of acetyl coenzyme A, in which a thioester bond links the acetic acid to a sulfur-containing cofactor coenzyme A, and pyruvate dehydrogenase exists as a large complex of several enzymes that catalyze the overall reaction in a three-step process. First is decarboxylation, second is oxidation, and third is conjugation to coenzyme A. From oxidation of a pyruvate molecule, one molecule of acetyl coenzyme A is produced along with one NADH and one carbon dioxide. Now we discuss Krebs cycle. Acetyl coenzyme A enters into Krebs cycle. In first step, acetyl coenzyme A adds its 2 carbon fragment to oxaloacetate and citrate is formed. Coenzyme A is released. This reaction is catalyzed by citrate synthase. अब हम Krebs cycle डिस्कस करते हैं।
एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है तो पहले स्टेप में ऑक्सालो एसीटेट के साथ मिलकर स्टेट बनाता है। ऑक्सालो एसीटेट 4 कार्बन वाला है, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन है, तो बनने वाला सिट्रेट 6 कार्बन वाला है। इस दौरान कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है। इस रिएक्शन को सिट्रेट सिंथेज एंजाइम कैटलाइज करता है। In next step, citrate is then isomerized to isocitrate through an intermediate molecule aconitate by enzyme aconitase. In next step, by decarboxylation and oxidation, isocitrate is converted into alpha ketoglutarate. During this process, NAD plus is reduced to NADH. This process is catalyzed by isocitrate dehydrogenase. नेक्स्ट स्टेप में सिट्रेट एकोनाइटेज एंजाइम की मौजूदगी में इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल एकोनाइटेट से होता हुआ आइसोसिट्रेट में आइसोमराइज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में आइसोसिट्रेट की डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन होती है। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है, एक NADH बनता है और आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाता है। In next step, by decarboxylation and oxidation, alpha ketoglutarate is converted into 4-carbon compound. This compound combines with coenzyme A, and as a result, succinyl coenzyme A is formed. Another NAD is reduced to NADH. This process is catalyzed by multi-enzyme complex अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटरेट की डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन होती है। इस दौरान 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लूटरेट 4 कार्बन वाले कंपाउंड में तब्दील हो जाता है। ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड कोएंजाइम ए से मिलकर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना देता है। इस अमल के दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, एक NADH बनता है। इस अमल को मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज जो है कैटलाइज करता है। In next step, succinyl coenzyme A is transformed into succinate and a molecule of ATP is formed. This process is catalyzed by succinate synthetase. In next step, succinate is oxidized to fumarate. Electron acceptor FAD plus is reduced to FADH2. This reaction is catalyzed by succinate dehydrogenase. नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट सिंथेटेज की मौजूदगी में सक्सिनेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस अमल के दौरान एनिमल सेल में GTP जबकि प्लांट सेल में ATP प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होती है और फ्यूमारेट बनता है। इस अमल के दौरान FADH2 बनता है। सक्सिनेट और फ्यूमरेट दोनों 4 कार्बन वाले कंपाउंड हैं। In next step, fumarate is converted into malate with the addition of water molecule. This reaction is catalyzed by fumarase. In next step, by oxidation, malate is converted into oxaloacetate. Another NAD plus is reduced to NADH. This reaction is catalyzed by malate dehydrogenase. Newly formed oxaloacetate is ready to enter into another Krebs cycle. नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन पर
फ्यूमारेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को फ्यूमारेज एंजाइम कैटलाइज करता है। अगले स्टेप में मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में मैलेट ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सालो एसीटेट बना देता है। इस अमल के दौरान एक NADH प्रोड्यूस होता है। नया बनने वाला ऑक्सालो एसीटेट नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल में एंटर होने के लिए रेडी है। Dear students, the products produced during Krebs cycle are 2 molecules of carbon dioxide, 3 molecules of NADH, 1 molecule of FADH2 and 1 molecule of ATP. Citric acid cycle of plants has unique features. First is the step catalyzed by succinyl coenzyme A synthetase produces ATP in plants and GTP in animals. Second is the significant activity of NAD plus malic enzyme. The presence of NAD plus malic enzyme enable plant mitochondria to operate alternative pathways for the metabolism of phosphoenol pyruvate derived from glycolysis. Malate can be synthesized from phosphoenol pyruvate in the cytosol via the enzymes phosphoenol carboxylase and malate dehydrogenase. Malate is then transported into the mitochondrial matrix where NAD plus malic enzyme can oxidize it to pyruvate. एनिमल सेल की निस्बत प्लांट सेल में होने वाले क्रेब्स साइकिल के कुछ यूनिक फीचर्स हैं। पहला ये, जब सक्सिनेट सिंथेटेज की मौजूदगी में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में ट्रांसफॉर्म होता है तब एनर्जी मॉलिक्यूल एनिमल सेल में जीटीपी जबकि प्लांट सेल में एटीपी प्रोड्यूस होता है। दूसरा ये कि एनएडी प्लस मैलिक एंजाइम की सिग्निफिकेंट एक्टिविटी है। NAD प्लस मैलिक एंजाइम की मौजूदगी में प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होने वाले फॉस्फोइनोल पायरोवेट के मेटाबॉलिज्म के लिए एक अल्टरनेटिव पाथवे ऑपरेट कर सकता है। फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में साइटोसोल में फॉस्फोइनोल पायरोवेट से मैलेट सिंथेसाइज हो सकता है। ये मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट होता है जहां NAD प्लस मैलिक एंजाइम उसे पायरोवेट में ऑक्सीडाइज कर सकता है। Dear students, here we can see reactions and enzymes of plant citric acid cycle. During citric acid cycle, in first step, acetyl coenzyme A is accepted by oxaloacetate and citrate is formed in the presence of enzyme citrate synthase. In next step, citrate is isomerized into isocitrate in the presence of enzyme aconitase. In next step, oxidation and decarboxylation of isocitrate is occurred in the presence of enzyme isocitrate decarboxylase and alpha ketoglutarate is formed. During this process, one molecule of carbon dioxide and one molecule of NADH are produced. In next step, oxidation and decarboxylation of alpha ketoglutarate is occurred and by addition of coenzyme A in the presence of alpha ketoglutarate dehydrogenase, succinyl coenzyme A is produced. During this process, one molecule of carbon dioxide and one molecule of NADH are produced. In next step, succinyl coenzyme A is converted into succinate in the presence of enzyme succinate synthetase. During this process, GTP is produced in animal cell while ATP is produced in plant cell. In next step, succinate is converted into fumarate in the presence of enzyme succinate dehydrogenase. During this process, a molecule of
FADH2 is produced. In next step, fumarate is converted into malate in the presence of enzyme fumarase. In next step, malate is converted into oxaloacetate in the presence of enzyme malate dehydrogenase. One molecule of NADH is produced here. In plant cell, there is a significant activity of NAD plus malic enzyme which provides alternative pathway to mitochondria for phosphoenol pyruvate metabolism. Malic enzyme decarboxylate malate to pyruvate and enable plant mitochondria to oxidize malate. Pyruvate is completely oxidized to 3 molecules of carbon dioxide. The electrons released during these oxidation are used to reduce 4 molecules of NAD plus 2 NADH and 1 molecule of FAD2 FADH2. Dear students, today lecture is ended here. Allah Hafiz.